भाबरे माने आंध्र प्रदेश आउ तमिलनाडु रो समस्त पास्टर मानक सहित आज एठारे एकत्रित होई अछु। From Odisha also we welcome all the prominent pastors. ओडिसा रो मध्ये आमे माने समस्ते सब पास्टर मानक स्वागत जणाउ अछु। Studying Bible Esther is around the 15th classes. आमे माने वर्तमान पर्यंत प्राय 15 टा क्लास हेलाडी आमे माने एस्टर पुस्तक विषय रे अध्ययन करूछु। Today according to the procedure of the actual class we are going to continue. आ जेमति कि आमे माने एस्टर पुस्तक विषय रे अध्ययन करूथुलु ठीक सेही प्रकार मध्ये आज आमे माने क्रमनय करिवु। Esther chapter 8 verse 15 to एस्टर 8 पर्व 15 पदरु chapter 9 verse 5 9 पर्व 5 पद पर्यंत। Now we must read in English and exchanging it because of other pastors. So Mordecai went out from the presence of the king in a royal apparel of blue and white, with a great crown of gold and garment of fine linen and purple. The city of Shushan rejoiced and was glad. ए उतारु मर्दखय नील और शुक्लवर्ण राजकीय वस्त्र पिंधि मस्तकरे सुवर्णमय बृहत मुकुट देई सरु और धूम्रवर्ण उत्तरीय वस्त्र रे वस्त्रान्वित होई राजा छामुरु बाहरी गला। The Jews had light and gladness, joy and honor. तहिरे सुसन राजधानी रे आनंद और हर्षानंदरे परिपूर्ण हैला। आउ जिहुदी मानकर दीप्ति और आनंद और हर्ष और संभ्रमर उदय हैला। And in every province and the city, wherever the king's command and the decree came, the Jews had joy and gladness, feast and holiday. And many of the people of the land became Jews because fear of the Jews fell upon them. पुणी प्रति प्रदेश रे और प्रति नगर रे जे कोनोसी स्थान रे राजाज्ञा और नियम पत्र उपस्थित हैला सेही स्थान रे जिहुदी मानकर आनंद और आमोद और भोजन और मंगलर दिन हैला। पुणी देश रे अनेक लोक जिहुदी मतावलंबी हेले जे हेतु से माने जिहुदी मानक सकासे भीत हेले। Now in the 12th month, that is the month of Adar, on the 13th day, the time came for the king's command and his decree to be executed on the day that the enemies of the Jews had hoped to overpower them. The opposite occurred in that the Jews themselves overpowered those who hated them. एथि मध्यरे अदर नामक द्वादश मासर त्रयोदश दिन रे राजाज्ञा और नियमर सिद्धि समय निकट हैला। अर्थात जेउ दिन जिहुदी मानक शत्रुगण सेमानक ऊपर कर्तृत्व करिबा को अपेक्षा करिथिले सेही दिन एपरि विपरीत घटना हैला जे जिहुदी माने आपणा घृणाकारी मानक ऊपर कर्तृत्व कले। The Jews gathered together in their cities throughout all the province of the king Ahasuerus to lay hands on those who sought their harm, and no one could withstand them because fear of them fell upon all. सेतेबेले जिहुदी माने आपणा मानक हिंस चेष्टा कारीगणक उपरे हस्तक्षेप करिबाको अक्षयसरस राजार जाबतीय प्रदेश रे आपणा आपणा नगर रे एकत्रित हेले। पुणी सेमानक सम्मुख रे केही ठिया होई पारिले नाही कारण समुदाय लोक सेमानक सकाशु भीत होइथिले। And all the officials of the provinces, the satraps, the governors, and all those doing the king's work helped the Jews because the fear of Mordecai fell upon them. आउ प्रदेशावधि ओ खितिपाल और शासनकर्ता और राज कर्मचारी माने जिहुदी मानकर सहाय्य कले कारण मर्दखय सकाशे से माने त्रास युक्त होइथिले। For Mordecai was great in the king's palace, and his
fame spread throughout all the provinces. For this man, Mordecai became increasingly prominent. जेहेतु मर्दखय राजगृह मध्यरे महान थिला ओ ताहार जस सर्व प्रदेश रे व्याप्त हैला कारण सेही मर्दखय उत्तरातर महान हैला. When we look at the life of Mordecai and the life of Esther, yes, not only they seem to have such a good work, even all the sufferings also over together. आमे माने जदि मर्दखयकर जदि जीवन देखिबा ताहाले मर्दखयकर जीवन रे समस्त विषय से जहा किछि भी करि छथि सेथिरे आमे माने तांकर क्लेश देखि परिबा. A night, just like a nightmares, all the actually rough days have been gone away. आ गोटे मंद रातिर स्वप्न परी तांकर सब प्रकार जोटा कि क्लेशर समय थिला ताहा सब बाहरी गला. Now see here, there are actually a lot of Jews all over actually the country of Media. जदि एठारे देखिबे ताहले एई मेदियो देश रे सेठी अनेक जिहुदी माने अछंती. But they are actually whether they die or not was never up to their lives and their actually works. से माने वर्तमान मृत्यु भोग करूछंती कि नाही ताहा सेमानकर निजर कार्य किबा निजर जीवन ऊपर निर्भर करू नथिला. Only their faith was up to the actually authority of these two men. One is Haman, the other was Mordecai. सेमानकर जहा भी विश्वास थिला तांकर विश्वास एई दुई जण व्यक्तिको ऊपर निर्भर करूथिला. जणे होउछंती मर्दखय एवं आउ जणे होउछंती हामान. Exactly, if you are going to say, then it was the war between Mordecai and Haman. जदि आपण देखिबे ताहाले एहा एक युद्ध थिला जहा कि मर्दखय एवं हामान को मध्य रे हेउथिला. According as who kept the rings of the king Ahasuerus, their faith was totally differentiated. आ जहां को पाखरे से राजा अक्षसरस्कर संतकीय अंगुरीय मुद्रिका थिला सेई अनुसारे तांकर जीवन परिवर्तित हैला. So when the signet of the king Ahasuerus was kept in the fingers of Haman, जेते बेले हामानकर अंगुठी रे सेई राजाकर संतक मुद्रिका दिया जाउची. yes, with that, the decree of Haman was made that actually ministered to kill. और से द्वारा आ सेमा जोटा कि हामान रो नियम पत्र थिला जहा कि मारिबा पई कि लोक मानको बना जायथिला ताहा संपूर्ण भाव रे लोप पाउची. But this signet was transferred to the hand of Mordecai. आ जेते बेल को ए संतक अंगुरीय मर्दखय को दिया जाउची. All of a sudden, the lives of the Jews were moved to the actually freedom from the bindings. आ सेते बेल को समस्त जिहुदी माने तांकर बंधन रो मुक्ति हे कि स्वाधीनता आडु को गति करूछंती. Yes, this is the Bible. Whatever happened was not actually caused by the work of man. आ एहा होची बाइबल आ जहा किछि भी वर्तमान घटुची कोनोसी विषय मनीषर कोनोसी कार्य द्वारा होउनी. Whether we go to the hell or heaven is not actually caused by our work. आमे माने स्वर्ग को जीवार विषय मध्य आम निजर कार्य द्वारा ताहा निरूपित होएनी. But in the time of actually King Saul and David also, that was the same thing. राजा साउल एवं दाऊदक समय रे मध्य एई प्रकार समान विषय घटिथिला. Yes, when Saul died, definitely, yeah, all the people who belonged to the Saul also was collapsed. और जो माने भी साउलक सहित थिले जेते बेले साउल मरि गले से लोक माने मध्य समस्ते तांक सहित हारि जाउछंती. When the King David was established, किंतु जेते बेले राजा दाऊद स्थापित हेले, yeah, all Israelites they had the freedom. और सेते बेले को समस्त इस्राएलियो माने स्वाधीनता पाउछंती. Now in this Bible also, actually, who is related with the signet of the king?
ଆଉ ଏଇ ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜାଙ୍କର ସେଇ ସନ୍ତକ ଅଙ୍ଗୁରୀୟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। It was very, very different like that. ଏଟା ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଏହି ପ୍ରକାର। When you studied about the man named Haman in Bible Esther, ଯେତେବେଳେ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣ ମାନେ ହାମାନ ନାମକ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ, all the time with the power of the signet, he wanted to make himself exalted. ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ସନ୍ତକ ମୁଦ୍ରିକାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା। That's why to establish his pride, all the time he misused the signet of the king Ahasuerus. ସେ ନିଜର ସେ ଗର୍ବକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅକ୍ଷୟସରସ ରାଜାଙ୍କର ସେଇ ସନ୍ତକ ଅଙ୍ଗୁରୀୟକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲା। When his pride was scattered, from that time on, actually, he tried to kill all the people of Jews. ଆଉ ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କର ଗର୍ବରେ ଆଘାତ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। Very oppositely, Mordecai was very different. କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ମର୍ଦ୍ଦଖୟ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ। Even though he was a cousin brother of Esther, who was made the queen in the palace of King Ahasuerus. ଆଉ ଯଦି ବା ସେ ଜଣେ ରାଜା ଅକ୍ଷୟସରସଙ୍କର ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରାଣୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏ କି ତାଙ୍କର କଜିନ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଆ ଯାଇଥିଲେ। In the state of all the Jews had to be killed by the decree of Haman, yes, he only stood before the Lord to ask grace. ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ମରିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲେ ସେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଉଛନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ। Now, in the Bible also all the same story have been written. ଆଉ ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ଲେଖା ଯାଇଛି। Why Hagar was crying, do you know that? ଆଉ ହାଗାର କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? Do you remember? The maid servant of Sarah, her name was Hagar. She cried a lot. ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନେ ଅଛି କି ସେଇ ସାରୀଙ୍କର ଯିଏ କି ଦାସୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ହାଗାର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। Because she didn't want to be disgraced. She didn't want to be disgraced. That's why she cried. ଆଉ ଯେ ହେତୁ କି ସେ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ, ସେ ତୁଚ୍ଛନୀୟ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରୁଥିବାରୁ ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। Why Mordecai cried out a lot? Do you know that? କାହିଁକି ମର୍ଦ୍ଦଖୟ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? Not for himself, for the lives of Jews. That's why he cried out to the Lord. ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। That's why even though Hagar and both, Mordecai cried, but the color of their tears were totally different. ଆଉ ଯଦି ବା ହାଗାର ଆଉ ମର୍ଦ୍ଦଖୟ ଦୁଇ ଜଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଲୁହର ରଙ୍ଗ ଥିଲା ତାହା ଭିନ୍ନ ଥିଲା। In the time of the law of Moses, ଆଉ ମୋସାଙ୍କର ନିୟମର ସମୟରେ what's the problem with them? Do you know that? ତାଙ୍କର କଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି କି? For the reason they were not able to fulfill the law of God, that's why in their heart they felt a lot of difficulties. ଆଉ ଯେ ହେତୁ କି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରିପାରୁ ନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅନେକ ଗୁଡେ କଷ୍ଟ ଥିଲା। I want to ask you, really, they actually couldn't fulfill the law of God, that's why they cried? ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ସେମାନେ କଣ ସତରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ନ କରିପାରିବାରୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କି? Otherwise, their own trust that was not ended up actually trusting themselves. That's why they cried. କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ସେ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ ହରେଇ ନ ପାରିଥିବାରୁ ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। Was it not that they couldn't rely upon the Lord, that's why they had to cry? ସେଠାରେ କଣ ଏମିତି ବିଷୟ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ପାରୁଥିବାରୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? Outwardly, they were not able to fulfill the law of God, but down in their heart, still, why they were trying.
बाहिक भाबरे देखा जाउची सेमाने व्यवस्था पालन करि पारु नाहांती किंतु तांकर हृदयर गभीरतारे सेमाने चेष्टा करूछंती से व्यवस्था पालन करिबा पई Theoretically, they seem to not to do anything before the law of God. आक्षरिक भाबरे देखा जाउची सेमाने परमेश्वरकर व्यवस्था सम्मुखरे किछि करि पारिबेनी Hello, prominent pastor, this morning I want to ask you. आउ समस्ते सम्मानीय पास्टर माने आज सखाळे मु आपण मानको पचारिबा को इच्छा करे Why people they cry in their prayer very bitterly? कोन पई कि लोक माने एते तिक्त मन हेई कि प्रार्थना रे कांदी थांती Because they commit a sin, that's why. से माने कोन पाप करिथिबारु कांदंती Otherwise, because they cannot keep the law of God. ना से माने व्यवस्था पालन करि पारु नाहांती सेथि पई Otherwise, they don't believe in the gospel. Jesus has made it completed with the shedding of his blood. ना जो सुसमाचार के जिसु निजर रक्त ढालिबा द्वारा सफल करी अछंती से सुसमाचार ऊपर विश्वास न करी पारुथिबारु से माने कांदु छंती By in their prayer, they look humble and actually cry bitterly. आ काहे कि तांकर प्रार्थना रे से माने बहुत नम्र देखा जाउ छंती आ काहे कि एते तिक्त मना हेई कि से माने कांदु छंती If we see the heart of the people, actually, how much they are contradicted. जदि आपण माने लोक मानकर हृदय देखिबे से माने केते विपरात्मक नुहंती It's not that they should actually suffer for the reason they cannot do. आ से माने किछि करि पारु नाहंती तार अर्थ नुहे जे से माने कष्ट भोग करिवे But they should be happy and take rest for the reason they are not able to do anything. जेहेतु कि से माने किछि करि पारु नाहंती सेथि पई कि से माने आनंदित होई कि विश्राम नै पारिबे Yes, in these days I was talking about Peter. ए दिन मानकरे मु पितरक विषय रे कहूथिली As you know, Peter denied Jesus Christ 3 times before rooster crows. Jesus Christ, as Jesus said, आ जेमिति कि आपण माने जानि छंती जिसुकर वाक्य अनुसारे कुकुडा दुई थरा बोबेबा पूर्वरु पितर जिसुଙ୍କୁ तीन थरा अस्वीकार करू छंती why do you think Peter had to cry? आ कोन पय कि पितर कांदिले आपण कोन बोली भाबु छंती Because he denied Jesus Christ. आ जेहेतु कि से जिसुଙ୍କୁ अस्वीकार कले Why he should not deny Jesus Christ? Who said to him, I want to ask you? आ से काहे कि जिसु को अस्वीकार न करिबा उचित किए तांको सेई प्रकार कहिला मु आपण मानको ताहा पचारिबा को इच्छा करे Why only he should not deny Jesus Christ? Why? काहे कि से जिसु को अस्वीकार करिबा उचित नुहे काहे कि But you think about this, what the reason she was very bitter and cried? किंतु ए विषय रे चिंता करंतु से कोन पय एते तिक्त बना है कि काहे कि से रोदन करूछंती You know, when he denied Jesus Christ before rooster crows twice, दुई थरा कुकुडा बोबेबा पूर्वरु जेते बेले से जिसु को अस्वीकार करूछंती तीन थरा for that reason, you know, what's wrong with Jesus Christ? आ सेते बेले से कारण पय कि जिसुको ठारे कोन भूल अछि Jesus said, you will deny me 3 times before rooster crows twice. काहे कि ना जिसु तांको कहिथिले कुकुडा दुई थरा बोबेबा पूर्वरु तुमे मते तीन थरा अस्वीकार करिवो The word of Jesus Christ came true. आ तांको पाखो जिसुଙ୍କର वाक्य आसिला Then, you know, we had to see the word of Jesus Christ was broken. आ ताहाले जिसुଙ୍କର वाक्य सत्य न हे कि कोन ताहा भांगी जिबा उचित थिला कि If there was something that was broken, then what had to be broken was broken. आ सेठारे जदी कोनोसी गोटे विषय अछि जहा कि भांगी जिबा उचित सेही विषय निश्चित भाबरे भांगी छी But, you know, to the word of Jesus Christ, and you know, there was nothing that was wrong. किंतु जिसुଙ୍କର वाक्य रे सेठारे किछि मध्य भूल नथिला Only in the thinking of Peter, he disobeyed Jesus. केवल पितरंकर निजर चिंता रे से जिसुଙ୍କର अबाध्य हेले No, when he was made to deny Jesus Christ, nothing became wrong to him. आ जेते बेले से जिसु को अस्वीकार करूछंती सेते बेले किछि मध्य विषय भूल होउनी तांको निमंते Because it is Jesus who made him actually deny Jesus Christ.
काहेकि ना से होचंती यीशु ख्रीष्ट जे कि तांको भूल करेइले Was जे कि it तांको good or अस्वीकार bad? करेइले Was it good or bad? ताहले ताहा उत्तम ना ताहा मंद Yeah, the word of Jesus Christ came through. यीशु ख्रीष्टकर वाक्य सत्य होउछि Then yeah, it is not good. ताहले कोन सेटा उत्तम नुहे कि Yes, whatever Peter did, the word of Jesus Christ was made established. पितर जहा किछि भी करिले से विषय द्वारा यीशुकर वाक्य स्थापित होउछि If Peter became a good person, not to deny Jesus Christ, then Jesus had to be made a liar. जदि यीशु को अस्वीकार न करिथांते पितर तेबे से यीशु अस्वीकार न करिबा द्वारा यीशु मिथ्यावादी बोली प्रकाशित हेइथांते Amen or not? आमेन Yes, of course, Judas Iscariot was used by the Satan. इस्करियोत यहूदा शैतान को द्वारा व्यवहृत हैला Yes, after sold Jesus Christ, he had to come out of it. जेतेबेले से यीशु को विक्रय करूछंती ता परे से विक्रय करिथिबा विषय रो बाहरी आसीबार थिला If through Judas Iscariot Jesus was not sold, then he wasn't actually he was not able to be crucified on the cross. आ जदि से इस्करियोत यहूदा जदि तांकर से दोषरु बाहरी आसी पारी थांते तेबे यीशु केबे मध्य क्रूसरे क्रूसार्पित हेई न थांते Yes, because of that, all our sins could be actually able to be washed away. तांकर सेही कार्य हेतुरु आमानकर समस्त पाप धौत हैला For example, Judas Iscariot never sold Jesus. उदाहरण सेति पई कि इस्करियोत यहूदा यीशु को केबे मध्य विक्रय करि नाहांती That's why Jesus wasn't crucified on the cross. आ सेति पई कि यीशु क्रूसरे कोन क्रूसार्पित हेई नाहांती How our sins would be cleansed 100%. आ जदि से क्रूसार्पित हेई नथांते केमिति आमानकर समस्त पाप 100% धौत हेई पारि थांता Here, when we know the will of God, humanistic feeling, we cannot, be very sad likewise. आ आमाने जदि एठारे ईश्वरंकर इच्छा देखिबा ताहाले आमाने मनीषर जोटा कि भाव प्रवणता किबा फीलिंग अछि से विषय द्वारा आमे माने किछि कहि परिबानी Likewise, all the time, God is overturning the way of our thinking. प्रत्येक मुहूर्त रे परमेश्वर आमानकर समस्त चिंतार विषय को से उल्टै दउछंती Amen. आमेन Now, once again, you think about this. आउ थरे ए विषय रे चिंता करंतु Yes, Father gave the portion that falls on the two sons. आ वर्तमान बापा तांकर पुओ को तांकर बांटो दउछंती Yes. For that matter, what happened exactly? आ ता परे कोन होउची If there was no portion, keeping the different heart from the heart of father, second son would not commit adultery, meaning halal. आ जदि बा से द्वितीय पुत्र कोनोसी व्यभिचार करि न थाते बेसिया मानको भेटि कि किंतु तांकर हृदय रे गोटे भिन्न हृदय रखि कि से रहि थांते That's why she was not able to be proud. आ ताहाले से केबे मध्य गर्वित मने करि न थांते Whatever he did wrong actually made him very humble in heart. आ से जहा किछि भी भूल कले से विषय तांको हृदय रे बहुत नम्र करि दउछि Whatever he committed sin, using the portion that he received from father, yes, he was made to see himself with a disappointed heart. आ से जहा किछि भी आ बापा कोठु तांकर बांटो नेई कि जाईथिले से बांटो द्वारा से निज प्रति हताश हेबार हृदय तांको भितरे गठित होउछि If he wouldn't commit any sin with the portion that he received from his father, then like first son, his brother, yes, even though he keeps the very different heart from the heart of the Lord, he would be very stubborn.
ଆଉ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ବାହାରକୁ ଯାଇ नथाते तांकर बांटो नै कि तेबे तांकर बड़ो भाई जेमिति कि से तांको बापांकोटु भिन्न हृदय रखी कि से समान जगह रे रही कि बहुत दाम्भिक भाबरे रही छथि से मध्य सेही प्रकार रही थांते. When we see the first son, outwardly his behavior looked very good. आमाने जदि प्रथम पुत्र को देखिबा ताले बाहिक भाबरे तार व्यवहार होची बहुत भलो. But inside of his heart was full of judgment toward his father and his younger brother. किंतु तांकर हृदय रे तांकर बापा एवं तांकर सानो भाई प्रति तांकर हृदय रे संपूर्ण भाबरे सेठरे अभियोग भर्ती हेकी अछि. Even though actually he worked very hard, but he was never revealed as a really just adversary against his father. आउ जदि बा से सेठारे विश्वस्त भाबरे काम करिकि रहुथिले से केबे मध्य तांकर बापांक विपक्ष रे जणे विरोधी बोली कहि कि प्रकाशित हेलेनी. Very unfortunately, he was not able to see the state of his heart. आ बहुत दुखदायक विषय जे से केबे मध्य तांकर निजर हृदयर स्थिति को देखि पारिलेनी. Like a lawyer written in Luke chapter 10. लूक 10 पर्व रे थिबा से व्यवस्था शास्त्रज्ञ सदृश्य. You know, very strangely, when man is wrapped with the righteousness of human beings, आ बहुत आश्चर्य भाबरे मनीष रो जो माने ठीक विचार अछि ता द्वारा जते बेले मनीष बंधा जाय थाए, they are not able to see the state of their heart. सेते बेले से माने केबे मध्य निजर हृदयर स्थिति देखि पारंतिनी. Even actually lawyer never found who is the savior of his soul talking with Jesus Christ at his presence. आ से व्यवस्था शास्त्रज्ञ से केबे मध्य पाई पारु नाहांती आ वर्तमान कहा विषय रे यीशु कहउछंती तांकु. Because he had his own righteousness. काहे कि ना तांको निजर धार्मिकता तांको पाखरे थिला. Likewise, you know, righteousness of human beings makes man blind. और ठीक सही प्रकार भाबरे मनीषर जहा किछि भी धार्मिकता अछि से धार्मिकता मनीष को अंध करि दिए. Yeah, with the right thinking of a man, actually, man is not able to see the state of their soul. और मनीषर जो ठीक चिंता अछि से ठीक चिंता द्वारा मनीष केबे मध्य ता निजर हृदय आत्मार स्थिति को से देखि पारेनी. Even they are not able to see actually who Jesus is. यीशु किए ताहा मध्य से माने देखि पारंतिनी. Now, you know, when father used the portion for second son, आ जते बेले बापा तांकर द्वितीय पुत्र को तार बांट देई दोछंती. yes, the portion of father given to second son exposed whatever actually he kept in his heart through his work outwardly. आ से बांट ए जो तांको बापा तांको सानो पुओ को देले से बांट वर्तमान से सानो पुओंकर हृदय रे जहा किछि भी तांकर बापांकर विरुद्धाचरण करिबा पई हृदय थिला से हृदय तांकर बाहिक भाबरे प्रकाश पाउछि. Yes, he was not successful to keep the portion of father. से केबे मध्य तांको बापा तांको जो बांट देले तांकर से बांट को से रखिबा पई मध्य तांकर योग्यता न योग्य से हेई पारिले. No one is able to keep the portion actually with sin in their heart. आ केही मध्य हृदय रे पाप थाई कि सेई भाग को निजे रखि सुरक्षित रखिबा पई कहार योग्यता नाही. That's why, you know, whatever father gave to him, okay? सेति पई बापा तांको जहा किछि भी देले. Luke chapter 15, there are two things like that. आ लूक 15 पर्व रे एई प्रकार दुईटी विषय अछि. Father gave to the second son twice, not only once. आ तांकर बापा तांकर द्वितीय पुत्र को दुई थर दोउछंती, थरे नुहे. When this second son went out, father gave the portion as he asked. जेते बेले द्वितीय पुत्र तांको घरु बाहरी जाउछंती सेते बेले से जेमिति मागुछंती ठीक सेही अनुसार तांको बापा तांको दोउछंती. After they wasted all these things, when he came back to the house of father, आ जेते बेले तांकर समस्त विषय से अपव्यय रे
व्यवहार करि सारला परे तांकर बापाଙ୍କ घरକୁ फेरी आसुछंती. Once again, father gave best clothes and the ring, signet and the sandals. पुणी आउथरे तांको बापा तांको सबुठु उत्तम वस्त्र हातरे मुदी आ पादरे पादुका दउछंती. What are these two things, do you know? आ ए दुईटी विषय कोन जानि छंती कि? The portion father gave to the second son, आ जो बांट तांकर बापा तांकर द्वितीय पुत्र को देइथिले, that is the old covenant. ताहा होची से पुरातन नियम. If you are able to keep it without damage, you keep it. जदि तुमे ताहा क्षति न करी कि रखिबा पय इच्छा करूचो तेबे तुमे ताहा रख. These are the laws of God. एहा होची परमेश्वरकर से नियम. Amen. आमेन. Finally, she actually wasted all things on that. आ शेषरे से समस्त विषय हरौछंती ना हरौ नाहांती. The portion of father, yes, was consumed by this man. Why? In him there was a sin. आ जहा किछि भी तांकर बापांकठु से बांट नै कि निजर गले से समस्त विषय को से नष्ट करि दउछंती काहे कि ना तांको ठारे पाप थिला. Yeah, she was a failure to keep trying to keep the actually portion without wasting. आ से किछि मध्ये विषय नष्ट न करी कि सेई बांट निजे साइति की रखिबा पाई तांको पाखरे कोनोसी शक्ति नथिला से विफल हेइ गले. You must understand, from one father, these two different things are given to him. ए विषय रे चिंता करंतु तांकर गोटी बापांको द्वारा ए दुईटा विषय तांको दिया जाईछि. The portion given to second son also came from father. आ जो भाग तांकर बांट तांको दिया जाईथिला सेटा तांको बापांकोठु आसीथिला. And the best robes and the rings and the sandals also came out of father. आ से उत्तम वस्त्र तांकर पादरे पादुका आ हातरे मुदी मध्ये तांको बापांको ठारु आसीला. Likewise, all the laws also came from God. आ एई प्रकार भाबरे समस्त व्यवस्था मध्ये परमेश्वरंको ठारु आसी अछि. A grace of God also, a grace of Jesus Christ also came out of God. आ जिसुंकर जहा भी अनुग्रह अछि से समस्त अनुग्रह मध्ये ईश्वरंको ठारु आसी अछि. Before second son was clothed with the best robe and the rings and the sandals. आ तांकर द्वितीय पुत्र से उत्तम वस्त्र पादरे पादुका आ हातरे मुदी पिंधिबा पूर्वरु. Amen. आमेन. Yes, actually, the first thing father gave to second son was the portion. आ ता पूर्वरु प्रथम विषय बापा जहा कि से द्वितीय पुत्र को देइथिले ताहा होची तांकर से बांट बा भाग. And after that, when you read the word of God, Luke chapter 15, there are another two houses. जदि आपण लुक 15 पर्वर आहुरी तळु को पढिबे ताहाले सेठी आउ दुईटा घर पाइबे आपण. One is the house of harlot. आ गुटे होची से बेसियार गृह. The other is the pig pen. आ गुटे होची से घुसुरी गुहाळ. All the pastors, I want to ask you, when exactly all this portion that he received from his father was totally exhausted. आ से जहा किछि भी बांट तांको बापांको ठारु पाइथिले से समस्त विषय तांकर शेष हे गला. Already when she stayed in the house of harlot, all the money was gone. आ जते बेले से बेसिया गृह रे वास करूथिले सेते बेले ही तांकर समस्त टंका शेष हे गला. Amen. Amen. Then after that, she started his own new life. आ ता परठु से निजर नुआ जीवन आरंभ करूछंती. After that, in the pig pen, she was fighting with the figs for the food. आ ता परे से घुसुरी गुहाळ रे घुसुरी मानक सहित लढाई करूछंती खाद्य पाइबा पई. Then the portion of father given to him, actually, he committed the sin more than double like that. आ तांकर जो बापा तांको जो बांट देइथिले से बांट द्वारा से आहुरी 2 गुण अधिक पाप करूछंती. Amen, right? Amen. Yes, we are actually double sinners. Or when we see the law of God.
आ आमे माने जितेबेले परमेश्वरंकर सेही नियम को देखिबा ताहले आमे माने होजु आ दुई गुण अधिक पापी. Amen. That's आमेन. how without receiving our portion of the actually forgiveness, as it is written, Isaiah chapter 40 verse 2. आउ जेमिति कि जिसाय 40 पर्वर 2 पदरे लेखा हेजी जदि से बांट नेई न थांते Yeah, we cannot survive. तबे आमाने केबे मध्य बंची न थांतु. Amen. You know, right? आमेन. That means, the grace of God should have the double power than the ministry of the condemnation from the law of God. आ सेथि पई कि ए जो दंडाज्ञा अछि परमेश्वरंकर व्यवस्था रे सेई व्यवस्थार दंडाज्ञा ठारू ईश्वरंकर शक्ति 2 गुण अधिक हेबा आवश्यक. Amen. You know, right? आमेन. That's why, even the Genesis chapter 32, there is a camp of actually God was called Mahanaim. आ सेति पई कि यदि आपण आदि पुस्तक रे देखिबे ताहले सेठी गोटे परमेश्वरंकर छाउणी अछि आ तार ना होची महानाइम. What is the meaning of Mahanaim? Do you know that? तेबे महानाइम रो अर्थ कोन जानि छंती कि? That is a double power. आ तार अर्थ होची 2 गुण अधिक शक्ति. Amen. आमेन. Now you think about this, when David married the second daughter of King Saul named Michal. ए विषय चिंता करंतु दाऊद जिते बेले राजा साउलंकर द्वितीय पुत्र मिखाल सहित विवाह करूछंती. King Saul asked actually 100 foreskins of the Philistines. आ सेते बेले राजा साउल दाऊदंकु आ 100टा अग्र चर्म आनिबा पई कहूछंती पलेस्टिया मानकर. That time, how much more skins actually were brought by David from the Philistines? एबे दाऊद पलेस्टिया मानकर केते गुण केतेटा अधिक अग्र चर्म नेई कि आसुछंती. 200. 200. That is double portion, right? सेटा होची 2 गुण डबल से नेई कि आसुछंती. Sister, to me, you have freedom. Go and scold your children and come back. Thank you, Pastor. Because they are not controlled. The pastors, please, you wait for some time, relax. While you are waiting, I'll play one music, okay? I'll play one music, relax. Now listening to the word of God continuously. वर्तमान जिते बेले आपण माने क्रमोन्वय भाबरे ईश्वरंकर वाक्य सुनुछंती. I'm actually explaining the power of two covenants. आ मु आपण माननकु ए दुईटा नियमर शक्ति विषय रे वर्तमान व्याख्या करिबा को आरंभ करिछि. In the word of God there are two covenants. One is the old covenant, the other is a new covenant. परमेश्वरंक वाक्य रे दुईटा नियम अछि. गोटे होछि पुरातन नियम एवं आउ गोटे नूतन नियम.
A new covenant has actually double power comparing with the old covenant. ये जो नूतन नियम अच्छी से नूतन नियम पाखरे पुरातन नियम अपेक्षा पुरातन नियम तुलना रे 2 गुण अधिक शक्ति अच्छी. No matter how actually thoroughly you have seen according to the law of Moses. आपण माने मूसांकर व्यवस्था अनुसार जेते कदर्य पापी हेई थांतु ना काहे की. In the blood of Jesus Christ there is a double power to cover all your sin. से नूतन नियम पाखरे 2 गुण अधिक शक्ति अछि आपण मानकर समस्त पाप को ढांकी देबा पई. No, David had a double power to bring the foreskins of Philistines, King Saul asked. और राजा साउल दाऊद को जो अग्रचर्म मागी थिले पलेस्टिय मानकर तांको दाऊद को पाखरे 2 गुण शक्ति थिला 2 गुण अधिक नेई के आसीबा पई. God has the power of a double camp named Mahane. परमेश्वरंकर से 2 गुण अधिक शक्ति रो छाउणी अछि ताहार ना होचे महानाई. Amen. आमेन. That's why no problem at all. सेति पई को किछि मध्य समस्या नाही. God has the truly power to clear your condition of the conscience and all the wrong feeling of the actually emotion and your thinking, whatever you sinned also, yes, can be forgiven with the more than double power of the mercy of the Lord. आ परमेश्वरंकर कृपा एवं दया रे 2 गुण शक्ति अछि जहा कि आपण मानकर समस्त भूल भावना एवं विवेक एवं जहा किछि भी आपण पाप करि अछंती एवं जहा किछि भी भूल धारणा अछि से समस्त विषय को क्षमा करिबा पई. Amen. 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 Yes. Yeah. That's why the new covenant of Jesus Christ has more power. That's why whoever is condemned by the law of Moses can get the freedom. जे हेतु कि से नूतन नियम पाखरे 2 गुण अधिक शक्ति अछि सेति पई से माने मूसांकर नियम द्वारा जहा किछि भी पाप करि थाउना थांतु पाप करी कि दोषी हेई थांतु ना काहे कि से समस्त विषय तांकर ढांकी दिया जाई पारिबो. When the woman transferred to Jesus Christ from the hand of man who condemned her according to the law of Moses. आ जेते बेलु को से स्त्री लोक को मूसांकर नियम द्वारा यीशु को सम्मुख को अणा जाउछि दोषी करी कि. Yes, here she was freed from the bindings by the law of Moses. आ यीशु को सम्मुख रे से समस्त प्रकार मूसांकर ए जो नियम रो बंधन अछि से बंधन रो से मुक्ति पाउछि. Constable arrested you. आपण को गोटे कांस्टेबल जदी अरेस्ट करिछि Commissioner will come and release you. जदी कमिश्नर आसी कि आपण को मुक्त करि देबे. Do you think a constable can go against the commissioner? आपण कोन भाबु छथि कांस्टेबल से कमिश्नर रो विरोध करि परिबो. Commissioner is much higher than the constable. काहे कि ना कमिश्नर हो छथि गोटे कांस्टेबल थारु आहुरी अधिक उच्चतम. He could say you are wrong. लोक माने आपण को भूल कहि पारंती. No, power of commissioner is much more than the power of a constable. किंतु कमिश्नर कर शक्ति होची कांस्टेबल रो शक्ति थारु बहुत अधिक. Amen. Amen. Likewise, when you read the word of God, there are 2 decrees. One is the decree of Haman, the other is the decree of Mordecai. आ ठीक सेमिति जेते बेले आपण ईश्वरंकर वाक्य पढिबे सेठारे 2टा नियम अछि. गोटे होची से हामान रो नियम पत्र आ गोटे होची मर्देखय रो नियम पत्र. Yes, decree of Haman was used to kill. आ हामान कर जो नियम पत्र थिला से नियम पत्र द्वारा से समस्त को मारिबा पई ताहा व्यवहार करूथिला. But at the moment Mordecai was established as a governor. आ जो मुहूर्त रे मर्देखय को जने गवर्नर भाबरे स्थापन करा गला. Yes, now you can understand Mordecai was established. आ वर्तमान आपण बुझी परिबे जे मर्देखय को स्थापन करा जाउछि.
from that time on, the history of life started to continue. ଆଉ ତା ପରଠୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନର ଇତିହାସ ଅଛି ତାହା କ୍ରମନ୍ୱୟ ହେଲା। When Haman was hanged on the pole, he was going to actually hang Mordecai. ଆଉ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟଙ୍କୁ ଟଙ୍ଗେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖମ୍ବ ହାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ସେଇ ଖମ୍ବରେ ସେ ନିଜେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦିଆ ଯାଉଛି। Yes, the power of decree of Haman was gone away. ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ହାମାନର ନିୟମ ପତ୍ରର ଶକ୍ତି ଥିଲା ସେ ହାମାନର ନିୟମ ପତ୍ରର ଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଉଛି। Likewise, when Jesus was trying to over the power and the principalities of Satan on the cross, ଆଉ ଠିକ ଯେମିତି କି ଯୀଶୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଉ ପାପର ଆଧିପତ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରୁଶରେ। yes, law of God, law of Moses lost all the power. ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ମୋସାଙ୍କର ନିୟମ ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ହରଉଛି। Amen na nai? Amen. 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 Now, this is not the age of 10 commandments. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା 10 ଆଜ୍ଞାର ଯୁଗ ନୁହେଁ। Now, after Mordecai was established here, ଆଉ ଏଠାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ପରେ, yes, all the people actually they were really rejoiced. ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। That's why verse 16 said the Jews had light and the gladness, joy and the honor. ସେଥିପାଇଁ 16 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା ଆଉ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଦୀପ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଓ ହର୍ଷ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମର ଉଦୟ ହେଲା। Then after that, the decree of Mordecai was Mordecai was spread all the country. ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମ ପତ୍ର ଥିଲା ତାହା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। From that time on, Agagites started to be slaughtered. ଆଉ ସେଇ ସମୟ ପରେ ସମସ୍ତ ଅଗାକିୟ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା। Amen. Amen. That's why how many people were killed? 75,000 people all over the country. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ସେଇ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 75,000 ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। There was an enemy actually who went against Jews like that. ଆଉ ସେଠାରେ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା ଯିଏ କି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଥିଲା। Before that, actually Jews were very much afraid. ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ବହୁତ ଭୟ କରୁଥିଲେ। Now, oppositely, Agagites, they are afraid of the Jews. କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗାକିୟ ମାନେ ସେମାନେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିଲେ। Actually, know that we were afraid of condemnation by Satan. ଆଉ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଶୈତାନର ଯୋଉ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଅଛି ସେଇ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ଭୟ କରିଥାଉ। Wherever you go with the decree of Mordecai, they will be afraid of you. ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବି ଆପଣ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟଙ୍କର ସେଇ ନିୟମ ପତ୍ର ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ ନିୟମ ପତ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରିବେ। Amen. Amen. Now, all those CLF pastors, you should know the fact like this. ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ CLF ର ସମସ୍ତ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। Two decrees at the time actually they cannot actually be parallel. ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ନିୟମ ଅଛି ନିୟମ ପତ୍ର ଅଛି ସେଇ ଦୁଇଟା ନିୟମ ପତ୍ର ଏକାଠି କେବେ ମଧ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହି ପାରିବେନି। Why people they are confused? କଣ ପାଇଁ କି ଲୋକମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି? Because they are putting the two different decrees in one church. କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। One is the 10 commandments, the other is the blood of Jesus Christ. ଗୋଟେ ହଉଛି 10 ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ। That's why before they actually start the worship service, ସେଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ they recite the 10 commandments habitually. ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ 10 ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। After that, they hear the gospel also. ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। That's why when they started to pray around the time for closing ceremony, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା ଶେଷ ହେବାର ସମୟ ଆସୁଛି ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, okay, they cannot help but
return to the thinking that they are human beings. पुणी आउथरे से माने निजर चिंता को फेरी आसुछंती जे आमे माने पापी. That again they will turn back to the conscience. सेति पई पुणी आउथरे से माने निजर विवेक को फेरी जाउछंती. Then that's why they say, I'm a sinner, forgive me, like this. आ तापरे से माने क्रमोन्वय भाबरे प्रार्थना करिवे मु पापी मते क्षमा करो. Because still they are influenced by the Haman's decree. आ काहे कि ना से माने वर्तमान मध्य हामान रो से नियम पत्र द्वारा प्रभावित होउछंती. Already it has been declared with the decree of Mordecai for a long time. आ बहुत लंबा समय पूर्वरु ही से मर्दखयंकर नियम पत्र समस्त को घोषणा करा जाई सारी छी. That's why they themselves are mixed up with the law of God in the time of grace of Jesus Christ. आ यीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रहर समय रे से माने निजे निज द्वारा से व्यवस्थार नियम द्वारा बांधी ही जाई छंती. Now you know clearly Haman died. आ वर्तमान स्पष्ट भाबरे आपण जानंतु जे हामान मरि गला. Amen. Just like this law is demolished. आ ठीक सेमिति समस्त व्यवस्था मध्य समाप्त होई अछि. Now in Orissa lockdown is dismissed. वर्तमान ओडिसा रे आ लॉकडाउन नाही. Everyone will go here and there very freely. समस्त एपडे सेपडे बहुत आराम रे जाई परिबे. No. ना. Oh, cannot believe. मु विश्वास करि पारुनी. I must be locked in my room. आ मु मोर रूम रे लॉक हे कि रहिबा आवश्यक. Then you cannot move free. ताहले आपण केबे मध्य मुक्त भाबरे कोडे जाई परिबेनी. Amen or not? Amen. 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 You cannot be free at all like that. ताहले एमिति केबे मध्य आपण मुक्त हेई पारिबेनी. That's why all the pastors are horse rider right now. आ सेति पई कि समस्त पास्टर माने होउछंती आ हॉर्स माने घोड़ा चलौथिबा लोक माने. In the time of decree of Mordecai, under the decree of Haman, many people are going to die. आ हामान रो जो नियम पत्र अछि से नियम पत्र अनुसार अनेक लोक वर्तमान मृत्युर सम्मुख रे अछंती. That's why all the pastors are made as a king's horse rider. आ सेति पई कि समस्त पास्टर मानको को वर्तमान राजांकर से अश्वारोही भाबरे स्थापन करा हेछि. Amen. I pastor. Amen. That's why Esther chapter 8 verse 10. एस्टर 8 पर्वर 10 पद. And he wrote in the name of King Ahasuerus, sealed it with the king's signet ring, and sent letters by couriers on horseback, riding on royal horses, bred them swift steeds. पुणी से राजा अक्षसरस नाम रे लेखी और राजार अंगुरिय रे मोहरांकित करी अश्वशाला जात राजकीय अश्व बाहनर रूढ़ द्रुतगामी दूतगण हस्तरे पत्र पठाइला. If you read the word of God, verse 9, actually, they started to write all the local languages also. आ जदि आपण 9 पद देखिबे ताहले से माने 9 पद रे आ समस्ते तांकर आंचलिक भाषा मध्य शिक्षा करूछंती. Like Tamil Bible, Telugu Bible, Oriya Bible, Hindi Bible. आ ठीक जेमिति कि तमिल बाइबल, तेलुगु बाइबल, हिंदी बाइबल आ ओडिया बाइबल. Now all the pastors, you are the carriers and the informer of the decree of Mordecai. सेति पई कि वर्तमान समस्त पास्टर माने होउछंती आ जने कैरियर जे कि हामानकर से मर्दखयंकर जो नियम पत्र अछि ताहा नै कि लोक मानकु जणैबे. Yes, go and show the decree of Mordecai. वर्तमान आपण माने जानतु एवं मर्दखयंकर जो नियम पत्र अछि ताहा घोषणा करंतु. The people, they could find how much for a long time they were deceived by the decree of Haman. तेबे समस्त लोक माने जानि परिबे से माने केते लंबा समय धरि कि हामान रो नियम पत्र द्वारा से माने
भ्रांत भावरे थिले। Amen. आमेन। Now this is very urgent. आ वर्तमान एटा होची बहुत अर्जेंट विषय। If you go and still many Agakite, they will go against you. जदि आपण जाई कि ताहा घोषणा करिवे तेबे अनेक अगाकिय माने आपणकर विरोधी हेई जिवे। But you should not have mercy on them. आ सेते बेले आपण तांको दया करंतुनी। Actually, all of these people were killed by Jews. आ ठीक जेमिति कि जिहुदी मानक द्वारा ए समस्त अगाकिय माने मरा गले। Yes, 75,000 people of Agakite were killed. 75,000 अगाकिय माने मरी जाउछंती। This is the meaning that time also many people they actually converted into Jews. आ तार अर्थ होची सेही समय रे मध्य अनेक जण थिले जो माने कि जिहुदी धर्म को से माने धर्मांतरित हेइथिले। So verse 17 in Esther chapter 8. एस्टर 8 पर्वर 17 पद। And in every province and city, wherever the king's command and the decree came, the Jews had joy and gladness, a feast and a holiday. Then many of the people of the land, because the fear of the Jews fell upon them. पुणी प्रति देश रे और प्रति नगर रे जे कोनसी स्थान रो राजाज्ञा और नियम पत्र उपस्थित हैला सेही स्थान रे जिहुदी मानकर आनंद और आमोद और भोज और मंगल रो दिन हैला। पुणी देशर अनेक लोक जिहुदीय मतावलंबी हेले जे हेतु से माने जिहुदी मानक सकासे भीत हेले। Hello, pastors, remember there are many people in this land who want to become Jews. आउ ए विषय रे मने रखंतु पास्टर माने सेठारे अनेक लोक थिले जो माने कि जिहुदी हेबा पई इच्छा करूथिले। And also you have a power of decree of Mordecai to make the people free from the decree of Haman. आपण को पाखरे मर्दखयंकर से नियम पत्र रो शक्ति अछि जहा द्वारा कि आपण लोक माननकु हामान रो से नियम पत्र थारो मुक्त करि परिबे। Amen. आमेन। Today this much I'm going to tell you because now I must go to Africa. मु आज आपण मानकु एतिकी पर्यंत कहिबी काहे कि ना मते वर्तमान अफ्रीका को जिबार अछि। I welcome all the actually pastors from other place. आउ अन्य स्टेट रो जो पास्टर माने आसी छंती मु समस्त को स्वागत जणाउछि। I want you to have a little time for fellowship here. आउ एठी आपण माने किछि समय सहभागिता निमंते रखंतु बोली मु आपण मानकु निवेदन करूछि। आसंतु मु प्रार्थना करिबी। Our Heavenly Father, by the grace of the Lord, we came to hear the word of God from Esther. आउ हे पिता परमेश्वर आमे तुमरो अनुग्रह द्वारा आमे माने आज एस्टर रो ए वाक्य सुनिबा पई सुजोग पाइलु। The power of the new covenant cannot be compared with the power of old covenant. नूतन नियम रो जो शक्ति अछि ताहा केबे मध्य पुरातन नियम रो शक्ति सहित तुलना करा जाई पारिबनी। That's why the law of spirit and peace has freed us from the law of sin and death. आ सेति पई कि जो आत्मा रो नियम अछि से आत्मा रो नियम आम माननकु से मृत्यु एवं व्यवस्था रो नियम रो मुक्त करी अछि। When the decree of Mordecai was declared, already the power of the decree of Haman was gone away. आ जेते बेले मर्दखयंकर से नियम पत्र घोषणा करा जाउछि सेते बेले हामान रो जो नियम पत्र अछि तार समस्त शक्ति समाप्त होउछि। Just like a fast is the horse rider of the king, let all the set of pastors preach the word of God to save the lives of this world, binding with the decree of Haman. आ जेमिति कि समस्त से नियम पत्र को घोषणा करूछंती ठीक सेमिति समस्त पास्टर माने जेमिति कि जगतर लोक मानक सम्मुख रे ताहा घोषणा करि परिबे। May God bless all of them. परमेश्वर समस्त को आशीर्वाद करंतु। In Jesus' name I pray. मु यीशु को नाम रे प्रार्थना कली। Amen. आमीन। Namaste all the pastors.